Assalamu alaikum everyone, and we are back yet again with my two co-hosts Zoha and Mustafeez. And surprise, Safa is back after almost 3 months. Anyways, last time we saw her Pakistan Australia ka match was a test match, and we lost that test match, and we lost the Asia Cup I needed final 3 months to recover. Yes, we also lost the Asia Cup final, which was unexpected considering हमें लगा था पाकिस्तान जब इंडिया के खिलाफ जीता था, most of us thought. Musti says no, that's not unexpected. No, I mean, हम तो कह रहे थे कि like this final is not going to be a straightforward win. ये तो no, I'm not saying मुश्किल नहीं होगा या हारेंगे नहीं, but the general perception was that if we can beat India, we When can we beat said Sri we were winning. Okay, that's what he's saying. Yeah. Win was with us. Yeah, like we were the like relatively favorite something. Yeah, like you can, but Sri Lanka fought very hard. I mean, they were struggling really badly. और एक time पे लगा था कि it's going to be a walkover considering उनकी 5 wicket foreign गिर गई थी, with Haris Rauf literally ripping through their batting lineup. But Hasaranga और Rajapaksa ने पाकिस्तान को बताया कि slightly reminded me of Marcus Stoinis and Matthew Wade, considering कि उन्होंने भी 98 for 5 से एकदम से उन्होंने comeback मारा. And we faced around 170 odd runs to win. Our start में हमारा बड़ा अच्छा रहा था. Like we had 10 runs without even facing a ball, thanks to their bowler. But उसके बाद we suddenly collapsed and choked. I mean, 2 wickets of 2 balls, and suddenly you realized कि आपने run rate देखा, it's nearly 12 per over, and you're going for 6 or 7 per over, and suddenly Khujdil, Asif Ali are here with the run rate being 14 and 15. Long story short, we lost, and it was a bad cricketing day. Like, it's not as if we were the weaker side or that we were not capable of winning. We just played bad cricket. Zoha, I would like your take on this question. I'm very upset. Actually, I'm more angry than I am upset because it felt like when we were bowling, it felt like at one point the boys knew that they had the game, and then whatever happened, it's a game. Things happen. Catch drop ho gaya, ya score ho gaya, whatever. When the target got to 170, I think somewhat उस वक्त शदाब so like उसको पहले चोट लगी, दोबारा चोट लगी. I think overall the morale went so down that the boys never like recovered from it. And from the very first ball, well, I hate the word intent. It's like such a Twitter pe wo intent, but it's like become I don't so have banal. a synonym for it. Yeah, I mean, but there is no other word. From the first ball, there was no. ऐसा लग नहीं रहा था they're going for the chase. ऐसा लग रहा था that they're just there. And they're just trying to draw. जैसे अच्छा, मजे की बात है, you could see the run rate creeping up, but still they're not hitting shots. Still, Hasaranga is bowling and you're just going for a straight drive or a tip. I want to say something here. Like, when one player is like going at one run a ball, then why is the other one not taking risks? When side pe ho raha hai. I personally think there was this fear of being dropped from the World Cup squad. Iftikhar is known to hit long, but if you saw the match, even he wasn't taking chances. Fakhar bhi pehli ball mein mara tha. Rizwan did take chances. My issue with that the thing with Rizwan was he did hit sixes, he did hit, but uske baad dot Rizwan that was so bahut ruk rahe the. I don't blame Rizwan for his innings. I actually don't. My thing with this is I do blame Rizwan. My thing for this is that मुझे पता है how Rizwan plays. This is his role usually. ठीक है, anchor करता है वो. And that's when Babar is accelerating on the other end. Usually हमारी power play ऐसे होती है, Rizwan anchor करता है, Babar accelerates, and then middle overs Babar थोड़ा slow हो जाता है, Rizwan accelerate. I think what happened was Babar was out of form और उसकी wicket गिरती गई, and then Fakhar की गिरी. It put Rizwan off his game. ठीक है, उसकी middle हो ही नहीं रही थी, तो वो कोशिश भी कर रहा था, वो shots नहीं लग रहे. I have a follow-up question. Yeah, exactly. He was trying. He was trying, but there's another question. If imagine you're Mohammad Rizwan right now, ठीक है, and if I get out soon, Asif Ali, Khujdil, Shadab isn't in his like proper sense, उसमें नहीं है, and Nawaz is a good player against fast in comparison to spin. Would you try
and slog and potentially lose your wicket, or would you continue with your anchor role, hoping कि इफ्तिखार कुछ करेगा? That's a question that I Yeah. thought of after like seeing ये question. सारे Twitter के सवाल. Yeah, I think that's where we. What the thing with Pakistan chasing is we always have to follow a script. ठीक है? हमने आज तक जितने chase किए ना, we followed a script. ठीक है? And I think that's where we lost. क्योंकि आपकी script पकड़ ली श्रीलंका ने. They knew what we were doing. ठीक है? They knew कि no matter what happens, Iftikhar is gonna come. मतलब the two matches where we didn't follow our script, एक जो नवाज भेजा and the other time we sent Shadab up, we won games. ठीक है? Here I don't know why Iftikhar was sent when he was sent. Even if udhar I fully like I don't understand Rizwan's 49 of 55 of 49 in a T20 game, but putting that aside, अगर उनकी argument ले लो that Rizwan had to anchor, um, just for the sake of argument, if Rizwan was anchoring एक end और दूसरी तरफ नवाज या शदाब जो भी आके they just like played for like 3 overs and they just went. I think बहुत कम हो जाता score deficit by the 10th over mark. You could have done better. I don't know what went. I personally think if like team management said, I still think we're slightly risk aversive. तो मेरे ख्याल से जब मैंने देखा ना बाबर और फखर दोनों आउट हो गए हैं बिल्कुल शुरू में, सेंडिंग शादाब और नवाज उनकी में एक विकेट गिर जाए and you suddenly realize you're 24 for Definitely ना. 3. Yeah, ये थोड़ा definitely वो wickets बचानी थी, collapse हाँ. बचाना था, but उसका क्या फायदा हुआ? We're still like I we think got to one. they took a risk, like took a chance, like by avoiding the risk, and that backfired. All out तो And फिर भी हो गया ना. वो All out तो तो फिर भी हो गया. वो तो Yeah, फिर so हो गया, like no, अब तो but हो गया. then like where did it pay off is my question. Like you were saving the wickets, you Yeah. lost those wickets anyway. तो फिर So I think we should go to Mustafeez now. He's been quite काफी देर से. अच्छा, Mustafeez, they all talk about a script, ठीक है? But if you notice something from the Sri Lankan team, they actually read our script perfectly. जब उनको पता था कि रिजवान और इफ्तिखार डिफेंड करेंगे, स्लॉग नहीं करेंगे, they brought on the right-handed fast bowler who was, in my opinion, the weakest person in their bowling lineup. And as soon as we reach the 13th, 14th, 15th over, when you expected कि अब मार पड़ेगी, you have Hasaranga coming out there to bowl. And Hasaranga का तुम्हें वो मैच में रिप्लेस दिखाएं, his googly had been so impressive. और उन्होंने दिखाया था कि किस तरह googly पे ये बोल्ड करता है लोगों को. And if you notice, Asif Ali was bamboozled with the same googly और उसी तरह सारे out हुए. So kudos to the Sri Lankans. And do you think in the end it was a bit more of a tactical play जिसकी वजह से हम हारे, या their combined efforts actually like paved way for them? यार हसरंगा को अगर आप 14 पर ओवर डिफेंड करने के लिए दोगे ना, तो ही विल विन द गेम 19 टाइम्स आउट ऑफ 20. ठीक है? तो जहाँ पे उनका टैक्टिकल प्ले है, द फैक्ट दैट वी them allowed someone like Hasaranga to defend at that economy. और उस वक्त पता था कौन था, किसकी विकेट ली थी उसने. हासिफ की ली थी, खुशदिल की ली थी मेरे ख्याल से, शादाब की विकेट उसकी थी मेरे ख्याल से. ये 3 तो मुझे याद, रिजवान की भी उसी की थी. ये चारों विकेट रिजवान था, आसिफ अली था और नवाज था मेरे ख्याल से, या खुशदिल या नवाज में से एक था, लेफ्टी था. हाँ, इनमें से. ठीक है. if you give someone like Hasaranga 14 and over to defend, considering he's one of the best leg spinners in the world, और considering कि आपको पता है कि opposition के पास कोई और चारा नहीं है सिवाय ऑल आउट जाने का, तो आई थिंक दैट्स ऑन यू. दैट्स ठीक है, टैक्टिकल प्ले है उनके पार्ट में. उन्हें पता था कि दे जस्ट हैड टू कीप हसरंगा देयर पीछे, और अगर उसके पहले ओवर निकाल लेते तो पीछे शायद there's a chance हो कि आसिफ अली इज वेरी गुड अगेंस्ट पेसर्स. पता है हमें, आसिफ अली एक ओवर में 4 छक्के पेसर को मार सकता है. आसिफ अली स्पिनर को भी मार सकता है, लेकिन द प्रोबेबिलिटी गोज डाउन राइट देयर. ठीक है? तो हाँ, थोड़ा बहुत टैक्टिकल प्ले था, लेकिन 14 रन ओवर आप किसी भी राशिद खान को दोगे, हसरंगा को दोगे, शादाब को आप 14 रन ओवर दोगे, किसी भी अच्छे लेग स्पिनर को आप 14 रन ओवर डिफेंड करने के लिए दोगे, दिल विन द गेम फॉर देयर टीम 19 टाइम्स आउट ऑफ 20. और दूसरी बात ये कि मैं थोड़ा सा बोलूँगा, इंटेंट का लफ्ज डज मैटर इन T20 क्रिकेट.
टेस्ट में नहीं मैटर करता मेरे लिए. That entirely depends on the way that the teams want to play. ODI में depends on the context. मगर मुझे एक बात बताओ, आप 170 चेस कर रहे हो. Okay, the end of the innings was bad in the sense कि you dropped a catch, it went for a 6, ठीक है. आखिरी दो बोले were 4 and 6, right? उन्होंने वो 10 रन जो आपने उनको दिए हैं ना, वो उन्होंने आपको पहली बॉल Yeah. में वैसे ही दे दिया. ठीक है, मोमेंटम आपके पास आ गया है. Now, the way that you should be thinking is, wait, they just gave us 10 runs for nothing. ठीक है, let's put more pressure on them. ठीक है, थोड़ा प्रेशर डालते हैं. अब 170 के बजाय हम 160 चेस कर रहे हैं. That's like 8.5 per over से आप सीधा 8 per over पे आ गए हो. ठीक है, it's 10 for no loss. Let's just try to go after them. By going after them, मेरा ये मतलब नहीं है छक्के मारो, मेरा मतलब है स्ट्राइक रोटेट करते रहो, कुछ करने की कोशिश करते रहो. वहां पे आपने 10 for no loss को ये समझ लिया है कि अब ये 10 रन मिल गए हैं, अब हम आराम से खेल सकते हैं. अब वो आराम से खेलने लाइक बाय इंटेंट का ये मतलब नहीं है, मुझे बोलने दो 2 Yeah. मिनट. इंटेंट का बोलो ये बोलो. मतलब नहीं, इंटेंट का ये मतलब नहीं है कि आप बल्ला पकड़ के आपने बस लॉक करना है. इंटेंट का मतलब है the other team has literally gifted you 10 runs for nothing. और वो 10 रन जो आपने उन्हें मुफ्त के दिए, उन्होंने आपको फौरन वापस दे दिए. आपके पास मोमेंटम है, यूज दैट मोमेंटम फॉर योर एंड, बजाय इसके कि आप लाइक. अब बात ये, यू मेक दिस क्रिटिसिज्म and Babar and Rizwan fans will tell you कि oh no, intent should not be that big of an issue. This is how they've been playing. This is how they've been playing, and this has worked in certain circumstances. Yes, but sometimes you need to understand that there's a reason we did not win the World Cup. There's a reason we have not won this Asia Cup. There's a reason we sometimes like there's always room for improvement, right? And this is a very clear improvement that you can see कि अच्छा हम कर सकते हैं इस मामले में. दूसरी बात, मैचअप्स मुझे नहीं पता कि क्यों लाइक फाइनल से घबरा गए हैं, इसलिए शायद मैचअप्स प्ले आउट नहीं किया है. ये जो तुम लोग बैटिंग ऑर्डर चेंज करने की बात कर रहे हो, इंडिया के खिलाफ इट वाज अ बिग गेम. ठीक है, फाइनल नहीं था. यू I was ट्राइड actually दैट going to come. That's a आगे की core discussion. पूरे एंड जो एंड batting यू order experimentation. Can एंड we like यू do that वन आगे? वन दैट गेम. ठीक है, तो अच्छा एक और चीज लाइक बिफोर दैट, हमारा इंटेंट कब शो हुआ है, 11वें या 12वें ओवर में, which was too late in its own self. ठीक है, रन बॉल आप खेल रहे हो, आपने आखिरी 10 ओवर में 13-14 का रन रेट करना है, जो कि बाय द वे तारीखी तौर पे हमें लगता है 10 का रन रेट पर ओवर इज नॉट टू मच फॉर द लास्ट 10 ओवर्स. तारीखी तौर पे वेरी फ्यू लाइक कोई 20-30% भी नहीं है, लाइक कोई 10-15% गेम्स हैं जो चेजिंग साइड्स जीती हुई हैं while chasing. Not even that, मेरे ख्याल से मैं बहुत ऊपर का नंबर बता रहा हूँ. लाइक कोई बहुत कम रेशियो है उन गेम्स की जो चेजिंग साइड्स 10 रन ओवर से ज्यादा आखिरी 10 ओवरों में चेस करते हुए जीती हैं. तो आप अपने जहन में एक फाइनल में ये नहीं रख सकते कि वो 13 का रन रेट हम लाइक विल गो ऑन एंड विल चेस दैट. अगली बात, द वे तो ये दैट सारी बातें हसरंगा, एक साथ क्यों कर रहे हो? नहीं मैं, क्योंकि तुम लोगों ने इतनी देर मुझे खामोश बिठाई रखा है ना. तुमने सारों के आखिरी टेबल बात, बराबर पकड़ा है. आखिरी बात, राजा पक्षा Let और him let हसरंगा, it all out. राजा पक्षा और हसरंगा क्या कह रहे थे? बाउंड्री रोटेट स्ट्राइक, बाउंड्री रोटेट स्ट्राइक, बाउंड्री रोटेट स्ट्राइक. अच्छा, बाउंड्री नहीं लग रही, स्टिल रोटेट स्ट्राइक. एंड रिजवान इज प्रिटी गुड एट दैट. मुझे नहीं पता ये उस दिन क्यों नहीं हो रहा था. लाइक इट डजंट मैटर इफ यूर द अदर गाय इज नॉट अप फॉर इट, उसको रन आउट करवा दो, मुझे कब फर्क नहीं पड़ता. इफ दैट इज द वे दैट रिजवान क्यों सक्सेसफुल होते हैं T20 क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में, बिकॉज ही रोटेट्स द स्ट्राइक सो वेल. वो सिंगल्स डबल्स ऑन एंड ऑफ करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है. एंड व्हेन यू आर टेकिंग दैट अवे फ्रॉम हिज गेम, तो फिर पता नहीं, लाइक दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. अब बोलो तुम लोग. Okay. Thanks, Thank you Mustafeez. for your valuable contribution. Lovely अच्छा, analysis. So there are a lot of things that we need to unpack, but वो थोड़ा आगे के लिए सोच रहे थे. My question for you is Okay. Safa. No, I have a question. If you notice, Okay, damn. इधर भी 5 विकेटें गिरी हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में भी 5 विकेटें गिरी हुई थी. You would assume that the Yeah. match is right there for taking. You're on the verge of actually going for it. Do you think that the team still lacks the mentality of actually winning big matches? I mean, if you look, Yeah. drop catches, big runouts miss. I mean, if you look in Australia wala match too, we had so many chances of actually hitting a direct throw or spray out ho jaye.
and suddenly वो भी नहीं हो रहा, and fielding is like going way beyond standards. Shadab Khan is dropping catches. Do you think that the fact that they're still youngsters and like not really experienced with such instances, it's getting to their head? Or do you think that we lack the gush? For example, जब वो 5 out हो गए थे, would you rather keep Iftikhar bowling and let them set, or would you bring back Hasnain, Haris, or Naseem for 1 over to like build up some pressure? I wanted your take on this, considering हमारे पास नवाज के ऊपर से पड़े हुए थे, who can actually ball बाद में. Yeah, that was very interesting, the Nawaz Ali cheese. लेकिन वही मुस्ती ने जो intent वाली बात की, I hate the word because every uncle is using it in such an annoying way, and the way they use it is come back the word. नहीं, yeah, their way of using the word intent is कि oh, and players में intent नहीं है शोएब मलिक को लेकर. Like this is the way they use intent is annoying. वरना I agree with the word. जैसे अब श्रीलंका की side देखो, they had a collapse like when they were playing against us, but they had that word intent that we're talking about. They picked themselves up because they know ये final है. They have to give it all. वो ही इंटेंट वाली चीज हमारे साइड में मिसिंग है when we're in this situation we're like नहीं, we have to stick to the plan, we cannot mess up, बाद में हम देख लेंगे क्या बनता है. लेकिन obviously that doesn't work and you have to adapt to the situation. I still don't blame Rizwan, to be very honest. I blame Iftikhar more. अगर इफ्तिखार को पता है उसे नहीं हो रहा और Rizwan has more runs than him और वो ठीक है थोड़ा सा सेट हो गया, you came before him, just get out. Like why are you not getting out? Achha, one more I don't thing, blame like Rizwan. literally related to this part. Mustafeez pointed out कि Rizwan 2 का कह रहा था, वो like doubles नहीं ले रहा. But there were many instances जहाँ पर Rizwan ने double की call दी थी and he started running as well. I remember Rizwan ने decline. इतनी दफा बाउंड्री मारने की कोशिश किया यार. To be very honest, श्रीलंका का honestly ये तो no one denies कि it was Sri Lanka's day. Sri Lanka was on top of their game. It becomes suffocating on the field. Like वो पूरी यार जान मार रिजवान रहे के हैं. चौके उनके एटलीस्ट 6 चौके ऑन एनी अदर डे रिजवान के लगने थे, उन्होंने रोके हैं प्रॉपर, उन्होंने रोके हैं like in ways that you're like how did they stop that? That's why I don't blame Rizwan. I really think Rizwan had the intent, like considering the situation, और उसके साथ वाला कोई Also- साथ देने वाला नहीं था. Also- I don't blame Rizwan. I disagree with the fact कि यार Yeah. कि उनको 5 विकेट मिल गई थी तो like we had the game. That's not how T20 cricket works. That's how T20 cricket works in our minds because that's the way we see T20. The modern day cricket नहीं नहीं, है. I'm not saying that we No, had no, the I'm- game. No, I said I'm saying that. that I'm talking to- I'm oh talking अच्छा अच्छा. हाँ. हाँ मैंने पहले I बोला don't था. think I don't think we had the game. जो उनका हसरंगा है, Yeah. that's their main all rounder. He put up a partnership, ठीक है? And this is something that Babar and Rizwan also talk a lot के partnership लगती है. उनकी partnership लगी है. We've seen it happen with us as well. हमें कितनी games जिताई हैं नवाज and शदाब वाली type की partnership से. So I don't think we had the game, and I don't think के like sure. the drop in catches is because of like experience नहीं है. इसके बाद तो I think I'll like this may be my bias, but Sir Glenn Mushtaq said that Shadab had concussion. How are you playing a concussed player? Of course Exactly. he's gonna drop catches. उसको नहीं नजर आएंगे ball, उसको नहीं उससे Exactly. catch यार होगा. Concussion. How are you you can speaking- you can replace him totally. वैसे भी, and he has concussion, and it's not as if हमारे पास fielders अच्छे नहीं है. Heather is a very good fielder. Yeah. आप उसको आराम से उठा के ला सकते हाँ हो. मतलब ठीक है मुझे समझ आती है कि they want to sit out शदाब के मतलब बैटिंग नहीं करानी थी उस because apparently they're like batting in for replacement होती है. उस्मान कादिर doesn't know how to bat. आप उसको फील्डिंग ना कराते, फील्डिंग सब्स्टिट्यूट तो आ सकता है कोई भी. Don't make them bowl. आप नवाज से वो ओवर्स करवाओ, make someone do the fielding. It's not like you didn't have bowling options either. You had Nawaz. खैर है शदाब के overs जाने तो it's fine. I don't know what was happening. I don't know हाँ. why or like Speaking of Saklan, yeah. yeah, I'm just So- saying कि जिहाद क्यों समझाता है मैच को अच्छा बड़े मजे की बात ये है, बड़े मजे की बात ये, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं नसीम शाह के क्रैम्प्स वाले टाइम पर, रिजवान के आईसीयू वाले टाइम पर, ठीक है. इट हैपेंस सो ऑफन येट वी डू नॉट लर्न. एंड आई एग्री विद जहाद. मैं तो हमेशा अहमद शहजाद बेचारे की हॉस्पिटल वाली बात याद आ जाती जब उसको हॉस्पिटल भेज दिया था, बेचारा 10 मिनट बाद वापस आ गया. मुझे पाकिस्तान को मेरी जरूरत है. तो going जनरली on? किसी और दुनिया की किसी मुल्क या किसी भी स्पोर्ट में ऐसे नहीं होता
कि एक प्लेयर कंकस्ट है, उसके कान से खून निकल रहा है और आप उसको वापस पिच में और डाल मुझे रहे अच्छी That's तरह याद है, insane. मुझे अच्छी That's तरह याद है insane. मैं ऑस्ट्रेलिया मैं याद वर्सेस बताता It हूँ was guys, disturbing seeing I him on don't the field. It remember really कौन was. सा प्लेयर था 2010 का वर्ल्ड कप फाइनल फुटबॉल का, अर्जेंटीना जर्मनी का, लाइक इट्स द वर्ल्ड कप फाइनल राइट। श्वाइनस्टाइगर का था, उसका भी यहाँ से खून नहीं भी नहीं, निकला था। 2010 में, वो 2008 का यूरो था, मैं 2000 सॉरी 2014 वर्ल्ड कप फाइनल, 2014 वर्ल्ड कप फाइनल था, 2014 का वर्ल्ड कप फाइनल था। देयर वाज एन अर्ली कंकशन एंड हमें इतनी सीरियस नहीं लग रही थी। क्रेमर था, क्रेमर जर्मनी का क्रैमर डिफेंडर, था उसकी जगह पे शूलर लेकर आए थे वो लोग। या Oh my वर्ल्ड God. कप फाइनल है भाई, कौन सा प्लेयर चाहेगा कि उसको निकाला जाए, ठीक है। हाँ Yeah. और फुटबॉल का वर्ल्ड कप फाइनल है व्हिच इज ऑब्जेक्टिवली अ स्पोर्ट वॉच्ड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं क्योंकि हमारी वो पाकिस्तानी मेंटेलिटी, हम कह रहे हैं चल रहा है, अच्छा खासा चलता फिरता बंदा है, वापस डालो उसे, Yeah. फील्ड में से बाहर क्यों निकाल रहे हो। इससे लेकिन वो मुझे एक और निकाला गया एग्जांपल था। याद नहीं, आती and है, I feel लिटरली like नहीं, एक सेकंड पहले मुझे एग्जांपल सुनाइए, हाँ, पहले मुझे The एग्जांपल player सुनाइए। always wants to play. हाँ बात ठीक ये, है, the player always wants to play. exactly, yes, exactly. You Jadeja don't listen to was the playing, player. Jadeja was playing against Australia और उसके 3 रन पे तो उसके सर पे बॉल लगी थी, he scored 50 runs, ठीक है। और उनको बाद में चला कि इसको कंकशन थी, स्कोर्ड स्टिल 50। उन्होंने उसको ड्यूरिंग मैच निकाल के अक्षर पटेल लेकर आए थे उसको स्पेशल, के ही इज लाइक ब्रो आई डोंट नो इसे 50 कैसे किया है, निकालो इसको। एंड एशेज में भी देखा, स्टीवन स्मिथ इज द बिगेस्ट थिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया उस टाइम व्हेन दे आर लाइक कंकशन रिप्लेसमेंट, लाबुशेन आ रहा है, ठीक है। हाँ, ये पाकिस्तानी होता तो उसने पट्टी बांध कर आ जाना था I अंदर have to क्राउड। be honest यार, जब वो like I saw Shadab get injured first, जब उसको पहले फील्ड में पहले लगी थी, जब it hit his head, I was like what's going on, like he needs to get off the field, but he Yeah, didn't. उसके yeah. बाद जब उसको दोबारा the catch drop and like he hit his head against Asif Ali, I'm not kidding, बहुत कम में साथ होता है, but I lost interest in the game और मेरा mind था कि like if something happens to him, Vibes where बहुत off World हो Cup गए आ थे रहा है, उसके। इसका जब इसने विकेट ली थी ना, इसके कान में से खून निकला था। आई टेक्स्टेड Yeah. इमीडिएटली कि सफा उसके कान में से खून निकल रहा है, ठीक है। एंड Yeah. I saw your tweet कि you're like is he bleeding from the ear, and I'm like if he's bleeding from the ear that means इसके सर में कुछ चोट लगी हुई है, इसको क्यों रखा हुआ है अभी तक। Yeah, Yeah, I and my was like mom, just get him off the हाँ, field. and my मैं mom's a मैच doctor, she's like पता है ना इंटरनल इंजरी भी हो सकती है जो कान में से खून निकल रहा है एकदम से। I'm like oh हाँ I was in like I'm a huge like मुझे बहुत डर लगता है ऐसी चीजों से. I'm a very paranoid person and मेरा Yeah. दिमाग हर जगह जाता है. I was like if something happens to him I'm gonna Yeah, go yeah. to PhD It's just not worth what it. are you doing? Unfortunately, I'm one of those वो मैं भी अपने स्कूल में ऐसी चोटें लगवा कर वापस उठ के भाग रहा होता था, मैंने खेलना है क्योंकि स्कूल को मेरी जरूरत है। So I get what they're trying to say. We only have No, but 10 minutes that's what left. Oh my God. Let's move on. Let's move on. Let's move on. Shoaib Oh my Malik God. immediately after the match tweeted कि this is what happens when you play according to your friendships and all. सबसे पहला question मेरा Love it. you only have everyone has like 2 minutes to respond to this. सबसे पहले Zoha, how can you manage to have such toxic people in your team from the age of 18 till 40 and he still trying to get in there? His name is I have 007, 0 matches won, 0 contributions, but 7 captains backstabbed. I have to confess I'm a Shoaib Malik fan for like pehle. I used to like Same. him growing up because of Preeti, Shoaib Malik. They were like a likable generation. And I still last year remember मुझे ना समझ नहीं आती थी उसकी टीम में जगह क्या है. But I used to think कि इसको आने दो because Babar seems to rely on him. So that like it's obvious कि Babar respects, trusts and like gives that regard to Shoaib Malik. और मतलब आप 40 साल के होके you know what you mean to that dressing room or you're just waiting for them to fail to tweet like this. Like how much of a low life do you have to be? I'm sorry I'm using this language It's to you, like but that like one relative, that It's so one true. relative in every हाँ function इंतजार करो तो कुछ खराब हो। मतलब मैंने तो कहा था पहले से ये होगा। and the fact that It's Babar pathetic. Babar stood out for him last year. मतलब उसने गालियां Yeah. खाई हैं अच्छी खासी last year team selection पे वर्ल्ड कप की. He like proper उसको जलील किया था मीडिया ने कि इसको क्या लेके जा रहे हो. बिल्कुल. But he हाँ Definitely. and like what are you doing man? You're 40. Get out. Like bubble that you're living in और बस खत्म करो. उसने क्या कर लेना था? Like honestly उसने क्या कर लेना था? What did he do last year? One match वो स्कॉटलैंड वाला वो खेला था अच्छा बाकी what was his contribution? Time out, give your Yeah.
I'm done. Mustafeez, I'm now moving on to you. जैसे ही उसने ट्वीट किया सबसे पहले कमेंट्स में माशाल्लाह हमारे कामी भाई ने मारा कि उसने भी ऑनेस्टी वो ठीक है, और फिर एकदम से यू रियलाइज कौन कौन लाइक कर रहा है उस ट्वीट को, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, इट्स लाइक सारा गैंग वापस आ गया है, ठीक है? योर थॉट्स ऑन दैट? मेरे ख्याल से द वे दैट मिकी आर्थ फेस्ड इट, जब हफीज ने कोई ऐसी बात की थी एक जमाने में, उसने कहा था यस आई डू हैव माय लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ठीक है, वेगली बात ये की थी, उसने कहा था आई लाइक द प्लेयर्स हु वर्क हार्ड फॉर द टीम एंड हु ट्रेन एवरी डे एंड हु I डू think व्हाटएवर that's दे great. कैन फॉर द टीम एंड आई डिसलाइक द प्लेयर्स हु डोंट डू दैट। तो अगर उस लिहाज से मेरी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं तो बिल्कुल हैं, डेफिनेटली हैं। तो मेरे ख्याल से दैट अप्लाइज हियर एंड यू सी दैट विद द करंट सेट ऑफ प्लेयर्स, दे आर अ सेट ऑफ प्लेयर जो मेहनत करते हैं, who give out their best, जो even if they're not For sure. they're the best players technically, they do give whatever they can and they do try to improve themselves every day rather than getting into these petty things. तो मेरे ख्याल से तो घास भी नहीं डालनी चाहिए इन चीजों को, बस ठीक बिल्कुल है सही जो बात है। और चलेंगे मुझे चलेंगे। याद है एक वो पीएसएल का शो होता था जहाँ फैंस वहाँ स्टेडियम, उसमें किसी प्लेयर ने कहा था वन फैक्ट दैट यू पीपल डोंट नो, तो उन्होंने कहा द लेजीएस्ट प्लेयर आउट देयर इज मोहम्मद आमिर। और इमाद वसीम का तो पता है माशाल्लाह फिटनेस टेस्ट हमेशा लास्ट आते हैं, एंड वर्ल्ड कप के लिए इवन दो ही फेल्ड दे मेड एन एक्सेप्शन कि अच्छा इसको ले जाओ। एंड कामरान अकमल इज स्टिल सेइंग कि आई डिजर्व अ चांस, एंड ही रिसेंटली पोस्टेड अ जिम से फोटो भी अपनी कि मैं तैयार हूँ वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए। आई मीन क्या मैं बोलूं। Oh अच्छा my God, cringe. अच्छा इसके बाद नाउ Oh my सफा, God. my question for you is कि Yeah. कल squad announce हो I रहा have a है। new question. Okay. Yeah, Uh-huh. it's like it's Then you whatever. go on. Do you Okay. think Shan Masood would actually make the team? And if you see someone Oh dropping, my God, I don't want to who's answer it- this question. who is it gonna be? I Is don't it know. going to Yeah, be it's actually, Fakhar Zaman or you know what the Pushkar actual Shah? question is? The actual question is कि आपकी टीम में क्या स्ट्रैटेजी का मसला है या प्लेयर्स का मसला है? जब आपके से क्लियर मुश्ताक कह रहे हैं नहीं, you're probably doing something right, then I'm sure players पे पहले गलती नहीं जाती, अब पहले ओवरऑल थोड़ी सी स्ट्रैटेजी देखो कि यार what kind of mentality are you bringing to the field? प्लेयर्स की बाद में आती है. If the players are told to do this, इंशाल्लाह वो they're ठीक just हो doing their जाएगी, job. वो ठीक हो I जाएगी। We don't have think till this is 4 p.m. कल to actually have the squad announced. ठीक है। I don't think it's a problem that's fixed by swapping players. It's just not. No, not in my opinion. I don't see how taking players in and out matters like this. Like अगर आपकी approach सही नहीं होगी, जब आपके main जो बाबर नहीं कर रहा, रिजवान नहीं कर रहा, ये सारी चीजें, they need to थोड़ा सा sit down with the team and be like, यार ये चीजें थोड़ी But different don't करनी you think पड़ेगी. it's like too late to actually ponder over this, considering the Also, squad announce करना ही squad ठीक है, announce। squad करो. also realistically, I don't think like realistically and statistically Babar will ever have a season this bad again. Like Yeah. this No. lost. Touch Babar wood. is So a Babar is lot of staying. our अभी जो I might get a lot of hate for this, but अभी जो reaction है ना बहुत ज़्यादा squad पे कुछ भी काम नहीं कर रहा, that has like been exaggerated because of Babar, Fakhar and Rizwan's form, तीनों की form नहीं है, तो वो थोड़ी बेहतर होगी ना, तो ये players पे काम हो जाएंगे, then it's strategy. Exactly, हमारी पूरी Our टीम ही top 3 पे चलती है, उनका problem is not जब players. वो चल जाएंगे वो। And like as much as I love Shan Masood, I don't think he's solving a problem. Yeah, वही तो exactly. फिर तो Exactly, Haider because Ali there will be रखा like हुआ है. 3 pivots in this team, 3 pivots. And Haider Ali is Yeah. already in the squad na. I would vouch for Shan if Haider Ali wasn't warming your bench for the last 2 years. Yeah, He's been on the bench. It's definitely. not fair on Haider Ali. उसको क्यों आप मतलब what It's not a player problem, na. That's not the root of the problem. Long shot. If you guys remember, Peshawar Zalmi में Haider Ali ने एक time पर 4 down आता था, like just slogging and winning matches छक्के मार के. PSL पे तो फिर then Misbah ul Haq has done that to Lahore Qalandars too, but No Misbah slander, please. no, I love Absolutely. Misbah. I love Yeah. him over Yeah. Afridi any day. Oh, same. Same. Aisha, one small question, one word answer. ठीक है. Considering the World Cup, realistically, I want 3 Mustafeez, words. where do you think हम पहुंच रहे हैं? Oh, Too sure. early to say, मैं इंग्लैंड की सीरीज के बाद बताऊंगा। मुस्तफीज अभी सवाल पूछे, अभी जवाब दो, अभी क्या लग रहा है हालात में? We're winning. That's my answer. We're so winning. जीत नहीं रहे हैं।
We are No, so I think winning. It's a very big I don't answer. record Say this. group stage, Record semi-final, this. final. At least- बताओ कौन सा? At least semis हम semi या final खेल रहे हैं लेकिन हम जीत नहीं रहे. ठीक है. We're winning. Zoha? I think think I we're think we're playing. We're no, but पता है क्या? The way that we ended Asia Cup, it's very Pakistani legacy to at least reach the finals. जिससे हमने end किया, everyone's like इनको तो कुछ नहीं. I personally think we're still going to like head till the semi-final और वहाँ पर heartbreak होंगे. Fine, it's fine. I'm okay losing finals, semi-finals in Australia. I don't have very high hopes in Australia. We won the World ODI Cup में World हारना Cup in चाहिए. Australia by the way. ODI World. But ODI World Cup से Damn. मेरी ज़्यादा उम्मीदें हैं. T20 is like anyone's game when it's the day. Like I अच्छा. don't like it's And- fine. And on that note, we have to wrap up this episode. And personally, I really enjoyed this episode क्योंकि इसमें कोई script के हिसाब से नहीं जा रहा था. Unlike Team Pakistan जिसका जो दिल कर रहा था दरमियान बोल ही जा रहा था. And Lol. on that note, it's time to end this episode. So from Faaiz Gilani, Mustafeez, Zoha, and Safa, it's Allah Hafiz.